Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, friends. How are you doing? Well, I hope you are very good and well. Shiv Shaf, mashallah. Today, in this video, I am going to tell you something about new in our channel. As you know that my audience, you are not my audiences, you are my supporters. You are, if you not support me, so I can't grow in YouTube journey. If you support me, so I can grow. And as you know that without supporting people can't grow in your life. And I always say to maximum everyone, don't expect anything from the peoples because Allah says in Quran Pak, always expect from me. हमेशा मुझसे उम्मीद करो ना कि लोगों से. And secondly, I'm not hope from anyone. किसी से उम्मीद मत करो because if your hope is not fulfilled, so you will disappoint it from the people, from the person, and you will and you and you start hating the people who never feel who was not fulfill your like hopes. So at the end we say just hope from Allah Pak because Allah Pak never disappoint you because Allah Pak love to us more than 70 mothers. 70 माओं से ज्यादा अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है. So यार, how can we forget Allah Pak? हम लोग अल्लाह को कैसे बुला सकते हैं? No, we don't need to say this thing. Allah Pak forget us not. Allah Pak never forget us. Allah Pak हमें नहीं बुलाता. We forget Allah Pak. हम अल्लाह पाक को बुलाते हैं. So we need to know that who is Allah. Allah कौन है? So Allah is the only king of all the kingdoms of whole world who will never die, जो कभी नहीं मरेगा. And no one is able for worship except Allah. और कोई भी अल्लाह ताला के सिवा इबादत के लायक नहीं है, काबिल नहीं है. So we know that if that day, like जिस दिन हमने इसको पहचान लिया ना कि who is Allah, so seriously we leave all things in the world and we start worshipping for Allah Pak. Allah says, you know, I don't need your worships for me. Allah कहता है मुझे तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है. You just worship for yourself to get a Jannah in Akhirah. Do virtues, don't do bad work. Always try to leave bad habits and implement on the good habits in your life. Because this is an examination hall where you are were sitting. जहाँ तुम बैठे थे अल्लाह ताला फरमाएंगे. So when we have no anything, we don't have time for apologize to Allah Pak. Allah Pak, please apologize. We are taking apologize to you. Please, you know that कि हमें माफ फरमा दे. So that day, that time, we will never do anything. So now we have time to leave all the bad things and go to Allah Pak and towards to Allah Pak. Okay, so let me start the topic. आज का टॉपिक बेसिकली है कि हाउ टू यूज गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव को यूज करने का बहुत ही आसान सा तरीका है. बेसिकली गूगल ड्राइव होती क्या. अभी रिसेंटली मैं एक मेरा दोस्त है, मैं उनको उन्होंने जो है ना मोबाइल चेंज करना था, तो मुझे कह रहे थे यार हम आज किस तरीके से जो है ना मैं अपना चीज़ों को डेटा को सेव कर सकूं. मैंने बोला यार नो इशू, आई एम हियर, सो व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन. अब आई एम हियर, सो व्हाई आर यू टेकिंग फेयर. जब मैं यहाँ हूँ तो फिर तुम डर क्यों रहे हो. नो इशू. तो मैंने बोला यार आप एक जीमेल बनाओ. मैंने जीमेल बना के दी उन्हें और गूगल ड्राइव ओपन किया और वहाँ पे ना उस जीमेल के अंदर जो मैंने नई जीमेल बना के दी, क्योंकि जो पुरानी जीमेल थी वो उसके फ़ोन में साथ ही ख़त्म कर दी उन्होंने. नई जीमेल बनाई. नई जीमेल बना के जितना भी डाटा था ना, तस्वीरें, पिक्चर्स वगैरह जो मेन थी, जो उन्हें चाहिए थी मेन, वो सब मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड किया. गूगल ड्राइव में अपलोड करने का तरीका क्या है? सिंपल तरीका है, आप प्ले स्टोर को ओपन करें और उससे डाउनलोड कर लें. सबसे पहले वैसे तो आपके मोबाइल में भी होनी चाहिए, होगी भी शायद गूगल ड्राइव है. ठीक है, अब आपने उसको ओपन कर लिया. अब उसमें जो है ना अपलोड का ऑप्शन नजर आता है. अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करें, आपको फोल्डर नजर आएगा और अपलोड नजर आएगा. अपने फोल्डर पे क्लिक करना है, अपलोड पे क्लिक करना है. जो जो पिक्चर तस्वीर आपने अपलोड करनी है उसको अपलोड करना है.